Download the app Maths Guide from Google Play today. अब स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं. ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम एंड इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. अब एप्टीट्यूड स्कोर हमने एक्स एक्सिस पर कंसिडर किया है. द वैल्यूज आर 40, 50, 55, 60, 70, 80 एंड ग्रेड पॉइंट्स को हमने वाई एक्सिस पे लिया है. The values are 1.8, 3.8, 2.8, 1.7, 2.8 and 3.2. Now for the x-axis we have selected the scale as 1 centimeter equal to 5 units. अब यहाँ हमने क्रिंक साइन किया है because 0 से start नहीं कर रहे. We are starting from 40. So 40, 45, 50, 55 up to 80. So 1 centimeter equal to 5 units on the x-axis. एंड वाई एक्सिस पे हमने जो स्केल लिया है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 यूनिट्स. सो 0.5, 1, 1.5 अप टू 4.5. अब सबसे पहला जो पेयर ऑफ पॉइंट है वो हम प्लॉट करते हैं. द फर्स्ट पेयर इज 40, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 40 एंड 1.8. सो 40 पे वी हैव 1.8, तो यहाँ पे आ जाता है 40 एंड 1.8. नेक्स्ट इज 50 एंड 3.8. 50 पे 3.8 यहाँ पे. सो दिस विल बी 3.8. 55 एंड 2.8. 55 पे 2.8. सो दिस वुड बी द पॉइंट हियर. 60 पे 1.7. 60 पे it would be 1.7. then 70 पे 2.8. 70 पे 2.8 over here. and 80 पे 3.2. 80 पे we have 3.2. so this is the point here. So if you see, the points are scattered evenly, right? They are distributed evenly. So इसलिए जो conclusion आएगा वो होगा no correlation. So since the points are scattered evenly throughout, we say that there is no correlation between x and y, that is aptitude score and the grade points. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.